Hello friends, in this video I am going to tell you my law strategy for CA finals as well as CA inters. Starting with the approach, I used to start with the classes of the particular chapter. So let's say मैं कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले मैं क्लासेस देखूंगी. क्लासेस देखने के बाद आई वुड स्टडी द बेयर लैंग्वेज फ्रॉम द ICI मॉड्यूल इटसेल्फ. मैंने हमेशा से ICI के मॉड्यूल से पढ़ाई किया एंड आई यूज टू अंडरलाइन द की प्रोविजन. सो लेट्स से कुछ ऐसे प्रोविजन है जो आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बट समहाउ सिंस आपने क्लासेस देखे हैं आपको वो उस टाइम पे समझ आ गया या फिर अपने फ्रेंड से पूछ के समझ आ गया, तो बुक में ही आप वो नोट कर लो, अच्छा ये वाले लाइन का मतलब ये था, सो दैट अगर आप उसको 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी भी पढ़ रहे हो यू आर एबल टू रिकॉल अच्छा इस प्रोविजन का मतलब क्या था जब मैंने उसको इनिशियली पढ़ा था. उसके बाद चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स भी होते हैं, आई यूज टू सॉल्व देम. पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है अच्छा क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेंगे, बट अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन तभी सॉल्व करते हो यू आर एबल टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. एंड जहाँ पे भी आप स्टक होते हो ना फिर आपको रियलाइज़ होता है अच्छा हाँ ये प्रोविजन मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें ये नुआंस भी था. एंड you should not just read them, you should read the question and then think in your mind, okay, for this provision section 65 is applicable, section 135 is applicable and वो provision में ये लिखा हुआ है and applying those provisions since director has done so and company has done so, the act of company is not valid. You should be able to reach to that conclusion after the reading of the chapter. So that's one thing. After I've completed a chapter, I used to solve all the questions of that chapter from question bank. So आपको कई सारे टीचर्स के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे अगर आप डिफरेंट वेबसाइट पे सर्च करोगे एंड परचेज दैट क्वेश्चन बैंक. मेक श्योर दैट इट कवर्स like good number of attempts, let's say 5-10 attempts, and in the answers they have used ICI language. The more you will read ICI language, more you will be able to remember it in your exams. So that's second thing. Third, writing practice. So you understood the chapter, you also tested your knowledge, but now it's the time to showcase that knowledge in exams. In the beginning it would be difficult, but there is a way to do it. So once I've started focusing on the writing part, जस्ट वॉच सम ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज वीडियो. यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने सर्टिफाइड कॉपीज का वीडियो डाला हुआ है. जस्ट वॉच देम एंड सी हाउ अदर पीपल हु हैव गॉट गुड मार्क्स, सी जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उन्होंने कैसे लिखा है, हाउ हैव दे रिटन इट, एंड उसके हिसाब से यू मेक योर ओन स्ट्रक्चर. सो आई शेयर यू माई स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. सो मैं जब भी लॉ का कोई आंसर लिखती थी इन द इनिशियल 3 to 4 lines आई यूज टू कोट द रेलिवेंट section of the act and if I remember subsection then also the subsection. उसके बाद I used to write the bare act कि अच्छा subsection ये बोलता है for this question. Then second part to my answer was analysis. So I used to write okay in this particular case company has done so, director has done so and the amalgamating company has done so, and then something around okay this section of the Companies Act states that. So applying the provisions stated above, you should actually mention okay if the act is not correct you should also mention what would have been the right act. and अगर आपके पास टाइम है तो पेनल्टी भी लिख दो, अच्छा ये गलत हुआ है तो इसकी पेनल्टी क्या हो सकती है. सो 3 parts. एक तो आपको ये बताना है कि सही किया है या गलत किया है, अगर सही नहीं किया है तो सही चीज़ क्या होती, एंड सिंस अब गलती कर दी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. अगर टाइम कम है देन यू हैव टू फिगर आउट कि क्वेश्चन ने किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस किया है, बट या देयर आर 3 parts टू इट. एंड देन थर्ड पार्ट विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट इज कंक्लूजन. ये कंक्लूजन में आई यूज टू राइट okay applying the provision stated above or considering the provisions of this act so and so thing is not valid. and आप actually conclusion में ऐसा लिख सकते हो कि this act is not valid and consequences are so and so, the right thing would have been to do so. So like that's the perfect way to think about an answer. Once you have that structure in your mind you have to just fill it, and since you have already gained the knowledge in the first step and the second step of the approach which is reading the bare act from the module and also testing your knowledge by going through the questions in the question bank, you would be able to fill that structure. Start with writing 2 to 3 answers per chapter. I won't
say I won't recommend that you write all the answers. I didn't do that. But कुछ आंसर्स बहुत अच्छे से लिख लो अलग अलग टॉपिक के, सो दैट यू हैव ग्रिप ओवर इट. कौन सा सेक्शन कैसे लिखना है, ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द फेमा एक्ट, सो वो सब का एक प्रैक्टिस होना चाहिए. अदरवाइज आप डायरेक्टली पेपर में लिखोगे तो बहुत अजीब लगेगा, एंड ये सब लिखना इज टाइम कंज्यूमिंग. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस इन लॉ पेपर इज ए, understanding and learning the style in which we have to write the law, B, time management, and C, the most important, the mind management. कई बार हमें चीज़ें आती होती हैं बट एग्जाम के प्रेशर में वी आर नॉट एबल टू इवेलुएट, वी आर नॉट एबल टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि एक्चुअली हुआ क्या है. सो उस कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. एंड एट द एंड सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स. डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है, बट इफ यू आर एबल टू सॉल्व 2 full mock test papers for law during your entire preparation, and that too in an exam environment. And when I say exam environment, it would be better कि आप 2 से 5 वाले टाइम में सॉल्व करो in a room where there is no one and you are very peaceful. 2 से 5 के बीच में you are writing the paper. Give yourself extra 15 minutes to read, and 5 o'clock के बाद you can't do anything. So that's the exam environment in which you should practice. So summarizing whatever I said, A, the approach is वॉच द क्लासेस. उसके बाद खुद से पढ़ो, पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करो. किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ एंड उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सो दैट यू गेट दैट प्रैक्टिस. उसके बाद यू डू द राइटिंग प्रैक्टिस, वॉच सम ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी वीडियो, मेक योर ओन स्ट्रक्चर, एंड देन स्टार्ट राइटिंग 2-3 आंसर्स पर चैप्टर. एट द एंड solve 2 mock test papers with the gap of, I would say, 3-4 weeks, so that you have time to learn from your mistakes and enhance your writing style. That's what I did for studying law during my CA finals and CA inter. I would be sharing other strategies of CA final and CA inter in the upcoming videos. See you soon. Bye.